Hello students, this is your Amit sir and I welcome you all in English class. Students, today we will experience the second part of this tragic story, Lost Spring. Tragic in the sense that in the first part we have seen the serious issue of our country, one of the biggest challenges in front of our country, that is child labor. Child labor is a very serious issue, and because of child labor, our first protagonist, Sahib, was not able to enjoy the basic things of childhood. Basic things in the sense that he was not able to have the good education and schooling. He was not able to wear the proper clothes, and he was not able to enjoy and play the games like tennis what he wanted. Okay, today we will see the second part of the story, and in the second part of the story the protagonist name is Mukesh. Mukesh is the hero of the second part of the story, and we will discover that what kind of facts related with Mukesh, where Mukesh lives, Mukesh कहाँ रहता है, and what kind of tragic history related with this character. इस कैरेक्टर के साथ कौन कौन सी समस्याएं जुड़ी हुई हैं. Okay, so let's directly jump into the second part of the story. Student, the second part of the story means the story of Mukesh is based in Firozabad. Means the setting of the second part is Firozabad. What was the second of the first part? Comment me in the comment box. Comment box में आप comment करके बताइए कि what was the setting of the first part, the story of Sahib Alam. The setting of the second part is Firozabad. Firozabad is famous for the glass blowing industry. Glass blowing industry is Firozabad is the hub of Bengal making and glass blowing industry, and because of that, the working place of Firozabad means the glass blowing industry is a very dangerous condition, is a very dangerous place for the worker. The industries are small huts, dark, no light, very poor ventilation, हवा का भी आना जाना नहीं हो पाता है वहाँ पर, very high temperature, full of smokes, lanes and their sanity town. बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम है, स्मोक से भरा हुआ रहता है, स्टिंक ऑफ गार्बेज, hovels of disintegrating walls, unsteady doors, no windows, very narrow lanes, overcrowded area with humans and animals. This is the working place and the living place of the people in Firozabad. Students, the third tragic thing is that thousands of adults, हजारों की संख्या में adults means बड़े लोग, and 20,000, more than 20,000 children work in that kind of industry, the glass industry, and because of that they could lose their eyesight and they could have so many health issues also. Student, dust of glass is very dangerous, and because of that the working people's eyesight and lungs badly affected. Even most of the older people in Firozabad are blind, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा लाइफ वर्किंग करते हुए गुजार दिया कहाँ पर, ग्लास इंडस्ट्री में, और वहाँ पर जो डस्ट बनता है ग्लास का वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है पीपल को, उनकी आँखों पर, उनके लंग्स पर. ओके स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. नाउ दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एरिया, and the subtitle of the story is I want to drive a car. The writer means Anish Jang फिर से मिलती है किससे, a boy, एक लड़के से, named Mukesh, who aspired to become a motor mechanic. वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. The author asked, वह लेखिका पूछती है, do you know anything about cars? कुछ भी जानते हो कार के बारे में? I will learn to drive car. He answers straight into her eyes, looking straight into her eyes. लेखिका की आंखों में देखते हुए कंफर्मिटी के साथ कहता है कि I will learn to drive a car and I will learn.
मीन्स ही इज डिटरमाइंड नॉट टू वर्क इन टू द ग्लास इंडस्ट्री. ये ग्लास इंडस्ट्री में काम नहीं करने के लिए डिटरमाइंड है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेन दिस इज द condition. Mukesh's family was involved in a profession of glass bangle industry. Okay, they did not know that it was unlawful to force the children to work in such glass furnaces. The workplaces were hot, dark, closed room without ventilation. They often ended up losing their eyesight also. वहाँ के लोग ये नहीं जानते हैं कि दिस इज अनलॉफुल, दिस इज लाइक अ क्राइम टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन टू द दैट काइंड ऑफ वर्क प्लेस, बट दे आर सेंडिंग, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन. उनके बच्चे जो है वह काम पर जाते हैं इन दैट काइंड ऑफ एरिया. मुकेश वॉज हैप्पी एज ही टुक द राइटर्स टू हिज होम. राइटर को जब वो अपने घर पर ले जाता है, ही वॉज वेरी हैप्पी. द हाउस वेयर मुकेश लिव्ड वॉज पार्शियली कंस्ट्रक्टेड हट. ये आधा हट था और आधा कंस्ट्रक्टेड था, सीमेंटेड था. ओके, एज मुकेश फादर एंटर्ड द हाउस, घर में जैसे ही मुकेश के फादर आते हैं, द डॉटर इन लॉ मीन्स द भाभी ऑफ मुकेश हाइड बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे चली जाती है, एंड कवर्ड हर फेस बिहाइंड हर वेल, आंचल के पीछे अपने फेस को कवर कर लेती है. इट वॉज द ट्रेडिशन ऑफ डॉटर्स इन लॉ टू हाइड देयर फेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ओल्डर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली. दिस इज द कस्टम. ऐसा हम लोगों के घर में भी होता है कि जब बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं तो घर की महिलाएं, लेडीज, स्पेशली द बहूज, हाइड देयर फेस बिहाइंड वेल, अपने घूंघट के पीछे अपना चेहरा छुपा लेती हैं. ठीक है. मुकेश's grandmother said that her son was destined to make bangles as it had been their family profession. She had seen her husband become blind due to the dust from polishing the glass bangles. Means the husband of grandmother means मुकेश के दादाजी ब्लाइंड हो गए वर्किंग इन द ग्लास Bengal industry. She said that their family had got this art of bangle making and so they had to carry on this tradition. भगवान के लिए they are carrying this tradition. Means they have been destined. They are thinking that कि उनके भाग्य में ही लिख दिया गया है कि बैंगल मेकिंग करो. They were born in a particular caste. एक खास कास्ट में उनका जन्म हुआ है, which had to follow the profession of bangle making. All the life they had just seen these glass bangles. पूरे लाइफ में इन लोगों ने सिर्फ बैंगल्स ही देखा है. Okay, now the story takes a little turn. There is a young girl named Savita. सविता नाम की लड़की है. शी वॉज सिटिंग विथ एन एल्डरली वुमेन. एक एल्डरली वुमेन के साथ बैठी हुई है. दे वर ज्वाइनिंग पीसेज ऑफ द ग्लास टू मेक बैंगल्स. वह चूड़ियाँ बना रही है. द राइटर वॉन्ड इफ सविता न्यू दैट द बैंगल्स वर गुड वुमेन फॉर द वुमेन्स वाइफहुड. सविता को ये पता है, सविता ये सोचती है कि सविता न्यू, राइटर को ये लगता है कि क्या सविता को पता है दैट शी इज मेकिंग द सिंबल ऑफ द सुहाग ऑफ द अदर लेडीज. द राइटर सजेस्ट देम टू कॉपरेट टू मेक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. राइटर उन लोगों को बोलती है कि आप लोगों को एक सोसाइटी बनाना चाहिए, यूनियन बनाना चाहिए. शी टॉक्ड टू अ ग्रुप ऑफ यंग मैन get out of the clutches into the cruel middleman who had trapped their elders. मिडिलमैन का मतलब होता है बाजार और मैन्युफैक्चरर के बीच के लोग जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं. ठीक है. आई थिंक यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड कॉमर्स और आप सब तो मिडिलमैन के बारे में ज़्यादा जानते होंगे. ठीक है. द men said that if they dared do something like that,
they would be dragged and beaten up by the police and sent to jail. Means वो लोग कहते हैं, the group of the youth people said that if they would try to make the group and union, तो middleman would come and they would beat them brutally and hand it over to the police. The writer felt that as they had no leader, writer को लगता है कि they had no leader, they could not think of doing things differently. The writer this time thought, सोचती थी, that there is the two separate worlds, दो तरह की दुनिया है. One was of such families who were stuck into poverty and the pressure of the traditional profession according to the caste. मतलब एक ऐसी दुनिया जो गरीबों की है और जो अपने कास्ट के हिसाब से काम करने के लिए फोर्स्ड है. एंड द अदर वर्ल्ड, नॉन एंडिंग साइकिल ऑफ मनी लेंडर्स, मिडिल मैन, पुलिस मैन, लॉ कीपर्स. और दूसरी दुनिया जो है वो अमीरों की है, मिडिल मैन की है, लॉ कीपर्स की है यानी कानून बनाने वालों की है, ठीक है, सोसाइटी को कंट्रोल करने वालों की है. मुकेश रिपीटेड दैट ही वुड बी अ मोटर मैकेनिक. मुकेश फिर से कहता है, ही इज कन्फर्म्ड विथ हिज ड्रीम कि वह एक मोटर मैकेनिक बनेगा. ही वॉन्टेड टू गो टू गैराज एंड लर्न द जॉब. वह काम सीखना चाहता है गैराज जा करके. द राइटर आस्क्ड दैट एज द गैराज वॉज डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम, मुकेश इंसिस्टेड दैट he would walk up to it. The author asked that if he dreamed, शायद वह काम कर ले इस चीज को क्योंकि वह ड्रीम देख रहा है. बट the author also thought that his dreams are like a flying planes. It's a very big dream and this is very difficult to have that kind of dream living in फिरोजाबाद. फिरोजाबाद में रहते हुए इस तरह का ड्रीम्स को पाना, it's a very difficult thing. So students, we are at the final sum up of the second part of the story, and in the second part of the story we have seen the protagonist Mukesh, a child labor in the family profession of a bangle making at Firozabad. He is daring and different from other young children of Firozabad. फिरोजाबाद के बाकी बच्चों से वो थोड़ा अलग है. He would have to submit to age old miseries and traditional profession. उसको भी अभी करना पड़ रहा है. But he wants to be a motor mechanic and wants to be his own master. अपना मालिक वह खुद बनना चाहता है. He is ready to travel a long way to the garage and is ready to learn the tricks of motor. We have also seen the economic condition of Firozabad. It's a very bad, exploited by sahukar, money lenders, middlemen, politicians, police and bureaucrats. इन ये सब मिल करके जो है, they are just making the life of the people in Firozabad very bad. All the profits are begged by them. सारे profits इन लोगों को चले जाते हैं. Workers are not allowed to make the unions, and those who try to make this kind of things are beaten and exploited. They are compelled to lead substandard, unhealthy and deprived life. उन सब को substandard और गंदा जीवन जीने के लिए फोर्स किया जा रहा है. पॉसिबल हैजार्ड्स, वहाँ पर क्या क्या हैजार्ड्स हैं? एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लॉस ऑफ विजन, स्किन बर्न्स, ब्रोंकाइटिस, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, जेनेटिक प्रॉब्लम्स ड्यू टू द exposure of chemicals, because in the glass industry lots of chemicals are used to make the bangles. So students, this was the final conclusion of the second part of the story. Finally, we have seen in this story, in this two part of the lost spring, that first part of about Sahib Alam and the second part was about Mukesh. Sahib Alam was a rag picker, Mukesh was a bangle maker. Sahib Alam is very poor, Mukesh is very poor.
Sahib Alam had to work in in the area, in the dirty area of the city, and had to collect the garbage. Mukesh had to work in the glass industry, bangle making industry. Sahib Alam is not able to enjoy his childhood, as well as Mukesh is not able to enjoy his childhood. So there are so many similarities, but one difference is there. Mukesh is having a big dream. He wanted to change his profession. Sahib is also wanted to change his profession, but at that time he is working at the tea stall. Both of them not happy, presently working in the tea stall or the glass industry. So this was the final conclusion of the story. Today you will receive the question answer of the story also. Till then, have a nice day, enjoy learning and read properly.